Okay, here everyone. Yes, last bench. I will not repeat again. Atharva, get up and come in the front. Quickly get up and come in the front. Last boy, get up and come in the front. Yes, second last benches, come in the front. Come on, get up quickly. Come and sit here. Don't sit there. Video is getting recorded. Sit here, I said. Sit here. One of you can come and join here. Yes. Join here. Okay. Listen to me once again. If you are not there to follow all the protocols which are told to you, then we are there to take the action, whatever is required. As you all are very new to this institute, so we are, always in the requesting mode. Don't do this and don't do that. Once it is told that as soon as the teacher enters in the class, you have to follow all the protocols. Okay? Don't allow me to repeat this when I come for the next period. Okay, in the last period, in our chemistry period, we had learned about the difference between the atoms, molecules and compounds, right? So I told you what is atom. What is atom? Atom is nothing but the smallest particle of an element is called as the atom, right? What is molecule? When two or more atoms combine together, they form a molecule. And what are compounds? When two different atoms combine together, they form a compound. Okay, so this is the difference between the atoms, molecules and compounds. So this was the discussion in the last period. Today we are going to talk about the types of chemical bonds in the chemistry. So you can give the heading types of chemical bonds in chemistry. Okay, so you all know that in chemistry there are different kinds of bonds are present, right? So what kind of bonds are present? You can note it down. Number one, ionic bond. Number two, covalent bond. Number three, polar covalent bond. Number four, hydrogen bonding. And number five, coordinate bond. Coordinate bond. Okay. So my dear students, how many number of bonds are present in chemistry? Total 5 bonds are present in chemistry. Number 1, ionic bond. Number 2, covalent bond. Number 3, polar covalent bond. Number 4, hydrogen bonding. And number 5, coordinate bond. Right? See, we are going to learn all kinds of bonding in the chapter chemical bonding. This year we have one chapter that is called as the chemical bonding. But before going into a chemical bonding, you all should understand that the basics of all kinds of a bond. मतलब इसका base क्या है? You should understand the base, then only you will understand what is chemical bonding. Okay? So number 1, we will talk about the covalent ionic bond. So what is ionic bond? You all can note it down. Ionic bond is formed by the transfer of electron. Right? ठीक है? तो एक चीज याद रखो, केमिस्ट्री में बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं? बॉन्ड्स फॉर्म होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज है. नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. नंबर 2, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड फॉर्म होता है. नंबर 3, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से.
बॉन्ड फॉर्म होता है। नंबर 4, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी बॉन्ड फॉर्म होता है। सो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड। क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया है? द बॉन्ड कैन बी फॉर्म ड्यू टू अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, the bond can be formed by the gain of electron, and the bond can be formed by the loss of electron. Are you understanding, my dear students? So these are the basic criteria for the formation of the bond. तो ये वाला जो bond है, ionic bond, is formed by the transfer of a electron. अब इसका example लेना होगा तो NaCl. NaCl is the best example of this. See, in this case, sodium will develop a positive charge and chlorine will develop a negative charge. Right? Now my question comes here, why they are developing a charges? Why they are developing a charges? Because one atom is giving the electron and the other atom is taking the electron. This is what is chemistry. Chemistry is revolving around this. Either transfer, either sharing, either gain or either loss. And this is how your chemical compounds are formed. एक तो वो ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन, या फिर वो शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन, या फिर वो गेन करेंगे किसी से, तो नहीं तो फिर लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को. ओके, सो दिस इज हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द NaCl एंड दैट इज कॉल्ड एज द आयोनिक बॉन्ड. नॉट ओनली NaCl, you can take the example of KOH. See, K plus and OH minus. We can take one more example, NaOH. This is also ionic bond, Na plus OH minus, right? So here in all cases you can see that there is a transfer of electron taking place from one atom to the other atom. Sodium is giving here, chlorine is taking here, potassium is giving OH minus, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, वो K plus is giving and hydroxyl group is accepting it. Na plus is giving, OH minus is accepting. Okay, so this is what is called as the formation of a ionic bond. So you can add one more sentence to this. Ionic bond is formed by the transfer of an electron between the two atoms. Write down. Ionic bond is formed by the transfer of electron between the two atoms. Okay? Okay, one more thing you all should know. Now whenever this particular compounds which are formed between the two atoms. Okay? Now in the case of ionic bonds, you can see that one atom is developing a positive charge and the other atom is developing a negative charge. Right? Maintain silence. Second last bench. There. So Na plus and Cl minus. The compound which is containing a positive charge will be called as the cation. The compound which is containing a positive charge will be called as the cation, and the compound which is containing a negative charge will be called as the anion. Okay, so did you understand this? What is cation and what is anion? During my online lectures I had already told you what is cation and what is anion. जिसके भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटायन. और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनायन. ओके, सो आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर एंड यू पीपल हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड. इसमें और बहुत सारे थियरीज है. आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, व्हाट ऑल क्राइटेरियाज आर देयर, दैट वी विल लर्न इन द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग. ओके, नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड. Give the heading covalent bond. Covalent bond is formed by the covalent bond is formed by the sharing of electron. Covalent bond is formed by the sharing of electron. Okay? तो पहले केस में क्या था? आयोनिक के केस में ट्रांसफर था. इसके केस में क्या होगा? शेयरिंग होगा. अभी शेयरिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? HCl. टेक द एग्जांपल ऑफ HCl.
Now how they are sharing the electron? See, hydrogen giving one electron, chlorine giving one electron, and they are forming the bond. समझ में आ रहा है बच्चों? This is the example of a covalent bonding. और एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं मीथेन का. See, in the case of a methane, we can see that the carbon is bonded to 4 hydrogen atoms. बराबर है ना? कार्बन कितने हाइड्रोजन से बॉन्डेड है? 4 हाइड्रोजन एटम से. हम लोग इसको रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी दिखा सकते हैं. देखो, instead of writing the bond, I can show that 1 electron of carbon and 1 electron of hydrogen. See, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दोनों ने शेयर करके ये एक बॉन्ड बनाया. Similarly here, and similarly here. Did you understand, my dear students? Yes. This is called as the sharing of electron. जहां पे दो एटम्स मिलके इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और बॉन्ड फॉर्म करेंगे, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट bond. Did you all understand what is covalent bonding? So you can note down this as an example. CH4 is one example and hydrochloric acid is one example. Okay? उसके बाद में हम लोग देखेंगे तीसरा वाला बॉन्ड, दैट इज द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, उसका भी हेडिंग दे दो आगे. First write down, copy down these examples. Copy down these examples. इसका नाम क्या है? CH4 का मीथेन. ओके, द नेम इज मीथेन, CH4. ओके, अभी तीसरा वाला बॉन्ड देखेंगे, दैट इज द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. आई विल राइट इट हियर, पोलर covalent bond. Okay, now you will ask me the question, what is the difference between covalent bond and polar covalent bond? Right, there is absolutely no difference. The only difference is when covalent bond becomes polar, that will be called as the polar covalent bond. Now the question comes here, you may ask me the question that sir, what is exactly polarity? Polarity का meaning क्या होता है? See, polarity means which develops two opposite charges are called as the polarity. Right? For example, NaCl का केस देखा था, Na plus Cl minus. What is happening in this case? There is a polarity where sodium is getting one charge and chlorine is getting one charge. So this is nothing but a polarity. Actually इसके केस में ये ionic bond है, polarity नहीं बोल सकते. यहाँ पे complete transfer होता है. Polarity कब होता है? इसके केस में polarity होगा. Sorry, HCl के केस में H plus and Cl minus. Right? जहाँ पे हम लोग plus delta और minus delta ऐसा दिखाते हैं. Now you will ask me the question कि NaCl में हमने सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस लिखा था सर, इसके केस में H प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हो रहा. NaCl के केस में क्या होगा था? पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया था. दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड एज द आयोनिक बॉन्ड. Right, taking place due to the transfer of electron. But here the covalent bond is formed, but the covalent bond has the polarity. Covalent bond में क्या है? Polarity है. Slight positive charge and slight negative charge. Okay? So एक चीज याद रखो कि covalent bond में दो तरह के bonds होते हैं. That is the polar bond, polar covalent, and non-polar covalent. Okay? अभी नॉन पोलर का मीनिंग क्या होगा? व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ नॉन पोलर? इट डज नॉट कंटेन नो चार्ज. वी कैन से नो चार्ज. ऑल न्यूट्रल कंपाउंड्स. न्यूट्रल कंपाउंड्स का मीनिंग समझते हो? व्हाट इज न्यूट्रल कंपाउंड? न्यूट्रल मीन्स जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, उसको हम लोग नॉन पोलर कंपाउंड बोलेंगे. समझ में आ गया? और पोलर किसको बोलेंगे? जिसके ऊपर चार्ज आएगा, उसको हम लोग पोलर कंपाउंड बोलेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे HCl
the bond is formed between hydrogen and chlorine. Okay, the bond is formed between hydrogen and chlorine, but इसके केस में अगर देखोगे तो हाइड्रोजन इज अ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर्ड टू द क्लोरीन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट जानते हो क्या? हाउ मेनी ऑफ यू नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट? ओके, फॉर दैट आई हैव टू टेक यू टू द पीरियोडिक टेबल, तभी समझ में आएगा. देखो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, सिंपल वाला दिखा रहा हूं, हंसो मत. ओके, दिस इज ओनली अ स्कीमेटिक मैप आई एम शोइंग यू, राइट? दिस इज योर S block, this is your D block, this is your P block and this is your F block. बराबर है, 4 ब्लॉक्स में हमारा पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है. इसमें जो भी एलिमेंट्स S ब्लॉक में पड़ेंगे, let's say I am standing like this, the elements which are there on the left side, right? The elements which are there on the left side, they are least electronegative, and the elements which are falling on the right side are most electronegative, right? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या है? सबसे पहले सर ये बताओ कि आपने तो बता दिया कि यहाँ पे जो पढ़ते हैं S ब्लॉक में वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो इस साइड में पढ़ेंगे वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स द एबिलिटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. किसी भी एटम का एबिलिटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यू कैन नोट इट डाउन, लिख लो मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स, यस राइट डाउन, electronegativity means the ability of the atom to pull the electron towards itself. Ability of the atom to pull the electron towards itself is called as electronegativity. Electronegativity. I repeat once again. Ability of the atom to pull the electron towards itself. The electron towards itself is called as electronegativity. अभी हम लोग जाएंगे एग्जाम्पल के लिए, that is the HCl. Okay. Now let's look at the position of a hydrogen and chlorine in the periodic table. चलो बोलो, हाइड्रोजन किधर है पीरियोडिक टेबल में? In the group number 1. And where is chlorine in the periodic table? Group number 17, right? Here is chlorine, right? Now you tell me which is more electronegative? Chlorine is more electronegative. अभी ये दोनों कैसे बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं? What kind of a bonding is there present in this case? Covalent bonding by sharing of a electron. अभी इसमें से दोनों भी covalent bond फॉर्म तो कर रहे हैं, बट कौन से तरह का बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. कैसे? व्हाई? बिकॉज क्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेगा? ये थोड़ा सा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा. इट विल पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. सी, द बॉन्ड विल लुक लाइक दिस. दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपेंड हियर? There is a slight shifting of an electron towards the chlorine atom, because chlorine is acting as the electronegative in a nature compared to the hydrogen. Hydrogen से ज्यादा electronegative है, तो obviously वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा. तो जब इलेक्ट्रॉन वो थोड़ा सा अपनी तरफ पुल करेगा तो इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा. स्लाइट चार्जेस को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं. समझ में आ रहा है बच्चों? स्लाइट चार्जेस को हम लोग
डेल्टा से डिनोट करते हैं, दैट इज व्हाई प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा। बट इसके केस में भी तो चार्जेस आता है ना, अभी क्वेश्चन ऐसा आएगा Na प्लस एंड Cl माइनस, बट यहाँ पे ऐसा है कि क्लोरीन ने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लिया है अपनी तरफ, नो, देयर इज अ एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोडियम टू क्लोरीन, एंड दैट इज व्हाई total transfer is taking place, this is called as the ionic, and here only slight shifting is taking place, that is why it is called as the covalent bond। कौन सा covalent bond? polar covalent। समझ में आ गया बच्चों polar covalent bond क्या होता है? Okay, then next one, hydrogen bonding। give the heading hydrogen bonding, write down hydrogen bonds are those kind of a bonds, right now, hydrogen bonds are those kinds of a bond which are formed between oxygen and hydrogen, ओके। ये बॉन्ड किसके बीच में होता है? ऑक्सीजन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में, दैट काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज द एग्जांपल? Example here is H2O molecule. See, can you see this case? The bond is formed between the oxygen and hydrogen. The bond is formed here between the oxygen and hydrogen. So such kind of a bonding is nothing but called as the hydrogen bonding, and it is a very very weak bond, right? You have to note it down. It is a weaker bond. Hydrogen bond is a weaker bond. You can write that also, and copy down this structure.